Hello students, how are you? We were discussing accounts of holding company. Now, today we will discuss illustration 26. In this question it is given that H company, that is holding company, is having 90% shares of subsidiary company and acquired the subsidiary company on 30th September 2017. It means the period between pre and post acquisition is 6 is to 6. How it is 6 is to 6? From 1st July 2016 to 30th September 2017, and then 30th September 2007 1st October 2017 to 31st March 2018. So the period is between pre and post acquisition period is 6 is to 6. Now, the balance sheet of subsidiary company is given on both dates, on 31st March 2017 and on 31st March 2018. Similarly, the balance sheet of H Limited is given as on 31st March 2018. And in the end, the question says, prepare the consolidated balance sheet as at 31st March 2018. Assume the absence of corporate dividend tax. Now, let us solve this question. In this question, in such type of question, we have to calculate capital profit, revenue profit, and cost of control. And cost of control may be goodwill or it may be capital reserve. First of all, we will have to calculate the profit earned during the year. We will have to calculate profit earned during the year. To calculate the profit earned during the year, we will take profit of subsidiary company on both the dates, on the opening balance and closing balance. Opening balance, as you see, it is 1 lakh and closing balance is 2,16,000. 2,16,000 is the closing balance of profit, और ये अराइव होता है तब जबकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 40,000 रुपीज़. कहाँ से आए 40,000 रुपीज़? आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व में 31 मार्च 2018 को बैलेंस गिवन है 4,40,000 and it is 4 lakh on 31st March 17. It means during 17-18 an amount of rupees 40,000 has been transferred to general reserve. So 2,16,000 रुपये का प्रॉफिट तब अराइव हुआ जबकि हम इसमें से 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके. अगर ये ट्रांसफ़र ना करते तो हमारा प्रॉफिट होता 2,56,000. आउट ऑफ 2,56,000, 1 lakh बिलोंग्स टू opening profit, so it will be deducted 2,56,000 and 1 lakh. Out of it 1 lakh will be deducted, so we will get 1,56,000. as you see, देखिए इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट में दिया हुआ है, the amount is 1,56,000. 2,16,000 closing balance, 40,000 transferred during the year, 2,56,000. It must be 2,56,000, but out of it 1 lakh is the opening balance, so the profit earned during the year is 1,56,000. 1,56,000 will be bifurcated into two parts, pre-acquisition and post-acquisition, and because it is 6 is to 6, so 1,56,000 will be divided equally in pre and post period, and it is 78,000. 78,000 pre-acquisition profit, it is capital profit, and 78,000 is the post-acquisition profit, that is revenue profit. Now we have revenue profit in our hands, 78,000. Out of 78,000,
The share of H Limited is 90%. So an amount of rupees 70,200 will be transferred to a revenue profit of H Limited. Now capital profit. To calculate the capital profit, capital profit, what we will have to take? We will have to take opening balance of profit and loss account, opening balance of journal reserve, and pre-acquisition profit. Opening balance of journal reserve is given 4 lakh, profit and loss account is given 1 lakh, and pre-acquisition period total profit was 1 lakh 56,000, 78 pre-acquisition and 78 post-acquisition. So the pre-acquisition profit is capital profit. We will add these three figures and we get 5,78,000 as our capital profit. Now we will calculate the cost of control. Cost of control में हम क्या करते हैं? Cost of control में हम जितनी अमाउंट होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए पे की, उसमें से उस अमाउंट को लेस करके देखते हैं जितनी अमाउंट उसे पे करनी चाहिए थी। अगर पे की गई अमाउंट पे करनी चाहिए थी वाली अमाउंट से कम पे की गई है तो कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को गेन होगा, प्रॉफिट होगा। इट विल बी कैपिटल प्रॉफिट एंड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर कम अमाउंट पे करनी चाहिए थी, ज़्यादा पे की गई, दैट इज़ ड्यू टू गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसीलिए होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल। नाउ वी विल सी, लेट अस चेक इन दिस क्वेश्चन what happens, is it goodwill or capital reserve? Balance of share in S Limited, balance of share S Limited, total shares हैं S Limited के 2 लाख, 90% शेयर है S होल्डिंग कंपनी का, so it becomes 1,80,000. Total capital profit is 5,78,000. 90% profit will be 5,20,200. So जो अमाउंट पे करनी चाहिए थी वो बनती है 7,02,000 और जो अमाउंट पे की गई एक्चुअल में वो कितनी दी गई है होल्डिंग कंपनी के द्वारा? होल्डिंग कंपनी के द्वारा 6 लाख रुपए पे की गई है। अमाउंट पेड इज़ 6 लाख, जबकि बनती कितनी है? 7,02,000। क्योंकि कम अमाउंट पे की गई है इसलिए होल्डिंग कंपनी को बेनिफिट हुआ। सो 1,02,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। नाउ द शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास 10% शेयर्स हैं, तो टोटल शेयर्स का 10% हिस्सा विल बी ट्रांसफर। टोटल 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 2 लाख का 10% कितना बना? 20,000 रुपये। देन कैपिटल प्रॉफिट इज़ गिवन एज यू सी 5,78,000। 5,78,000 का भी 10% हिस्सा विल बी गिवन टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देन रेवेन्यू प्रॉफिट इज़ 78,000। 78,000 का 10% हिस्सा, दैट इज़ 7,800 विल बी गिवन टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एड दिस थ्री फिगर्स 20,000 as share in equity capital, then share in capital profit, and then share in revenue profit. Add these three figures, you will get the share of minority interest. So in this way, the whole question will be solved. Thank you.